Hey guys, welcome back to Score Good. So today we are going to do chapter number 1, which is Matter in Our Surroundings of Chemistry class 9. It is part 3. If you have not watched the previous two videos, then please go and watch them. Their link is available in the description box. So let's get started. So friends, today the topic which we are going to do is changing states of matter. That means how matter changes its state from solid to liquid or liquid to gas or gas to solid and more. Okay, so there are two ways in which the matter can change its state. The first one is by increasing or decreasing the temperature, and the second one is by applying pressure. So the first is change of temperature. To show that matter changes its state on increasing temperature, we will perform an activity. So इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं in the image A, we are having a beaker in which we are having 150 grams of ice, and also we have put a thermometer there, and we also having glass stirrer, and the burner is on. So what will happen when we start heating the beaker? The temperature of ice will start to increase. Okay, तो जब अब हमारी आइस का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि अब वो वाटर में कन्वर्ट होने वाली होगी, तो उसका जो टेम्परेचर है वो उसी जगह पर रुक जाएगा जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हीट प्रोवाइड हो रही है उस टाइम पर वो सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रही है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज कर रही है, जिससे कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते करते अपनी जो पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन है, उनसे फ्री होने लग जाते हैं. और जब वो स्टेज आ जाती है, जब सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं लिक्विड में, वो वाला जो पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो ये बात नोट करने वाली है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस आइस है, सपोज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस आइस है और वो अब वाटर में कन्वर्ट हो गई है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो इन दोनों में से किस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? इन दोनों में से वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, बिकॉज वो उसकी जो पार्टिकल्स है वो इतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं कि वो सॉलिड से लिक्विड बन गए. उनके पार्टिकल्स की फिक्स्ड पोजीशन जो है वो फ्री हो गई और मूव करने लगी. तो हमारे पास इससे एक टर्म आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. Now also, what is melting, or we can say what is fusion, because melting is also called fusion. So fusion is the change of solid state into liquid state on heating. Okay, so similarly, when we supply heat energy to water, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. जब हम वाटर को अब सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी, तो जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी फास्ट मूव करते हैं, बट अब वो इवन फास्टर मूव करने लगते हैं. एट अ सर्टेन टेम्परेचर व्हाट हैपन्स? अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाए. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस. यही वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड गैस में चेंज होनी शुरू हो जाती है, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो अब अगेन क्वेश्चन आता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री
सेल्सियस गैस में से किस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. So again we got the same answer, again we got the answer gas, because the same reason and काइनेटिक एनर्जी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं. और ज़्यादा क्यों मूव करेंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट होगी. Boiling point. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called as its boiling point. वो टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. So friends, we are having two latent heats. The first one is latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? The amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. So latent heat of fusion क्या है? Latent heat of fusion है कि कितनी हीट चाहिए हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर. द सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो बिफोर नोइंग व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेट्स सी व्हाट इज वेपराइजेशन. सो वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस. ओके, so now let's see what is latent heat of vaporization. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. मतलब amount of heat energy कितनी चाहिए हमें 1 kg of liquid को boil करने के लिए, और वो boil करके वेपर्स में चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए. ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, नाउ लेट्स सी सब्लिमेशन. द चेंजिंग ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैस एंड वाइस वर्सा. मतलब सॉलिड्स का बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली ही गैस में चेंज हो जाना, और वाइस वर्सा मीन्स गैस का डायरेक्टली सॉलिड्स में चेंज हो जाना. ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है. नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी to see the process of sublimation. So for the activity, the material required are first ammonium chloride, then burner, china dish, funnel and a cotton plug. So this is the procedure. We have to take ammonium chloride or camphor and crush it and put it in a china dish. Then we have to put an inverted funnel over the china dish, and then we have to cover the funnel with the help of a cotton plug. Then what will happen, we have to observe. So the observations we get is that the ammonium chloride vapors are formed and then the vapors solidifies. क्या होता है जब हम बर्नर ऑन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में बदल जाता है, और कुछ टाइम बाद वो वेपर्स उधर ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं. So this is the interconversion of states of matter we saw till now. First, the solid into liquid is fusion, liquid into solid is solidification, liquid into gas is vaporization, gas into liquid is condensation, then gas into solid and solid into gas is sublimation. So now we have approached the topic change by applying pressure. So as you can see in the diagram, we are having a cylinder and piston. In the first cylinder we can see there is gas. On applying pressure on gas, it changes into liquid as seen in the second cylinder, and on applying pressure on the liquid, it changes into solid as you can see in the third cylinder. Similarly, if we apply pressure on carbon dioxide, it directly changes into solid carbon dioxide or dry ice, and when dry ice is heated, it directly changes into carbon dioxide.
Now let's see what is Kelvin. Kelvin is denoted by K. So temperature is measured in Kelvin. That means Kelvin is the unit of temperature. For any number, say x degree Celsius, it is equal to x plus 273 Kelvin. Now let's just take an example, 100 degrees Celsius. It is equal to 100 plus 273 Kelvin, that is equal to 373 Kelvin. Now if we reverse, for say Kelvin is equal to how much degree Celsius. So for example 300 Kelvin will be equal to 300 minus 273 degree Celsius, which is equal to 27 degree Celsius. So here are two questions on the screen. Hope you will be able to do it. I will discuss the answers in the next part. Okay, so now let's just meet in the next part, and if you like this video then please like, subscribe and share my channel. Thank you.